कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के मॉडल पेपर और उसके सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम देखो सेकंड पेपर की बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपने एक सब्जेक्ट छोड़ा भी होगा और जो सब्जेक्ट कंटिन्यू किया होगा उसके अंदर आपको दो दो एग्ज़ाम देने होंगे। मतलब हर पेपर के हर सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे। ठीक है, तो जूलॉजी के अगर आपने चूज़ किया है तो उसके भी दो पेपर होंगे, पेपर वन पेपर टू। ठीक है, पेपर वन के भी मॉडल पेपर हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास में पेपर टू की बातें करते हैं। ठीक है, और भी हमने मॉडल पेपर वगैरह जो डिस्कस किए हुए हैं वो कहाँ मिलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इसके क्लास नोट्स वगैरह भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, या अभी तक नहीं होंगे तो जल्दी वो अवेलेबल हो जाएंगे, चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जूलॉजी के अलावा बॉटनी हो गया और भी केमिस्ट्री हो गया, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और क्लास लेक्चर वगैरह हमने स्टार्ट किए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर एक को करिकुलर का भी एग्जाम होता है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के नाम से। उसका भी मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज वगैरह हमने अपलोड किए हुए हैं, उसका भी लिंक आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, देखो आपको हर क्लास के नोट्स भी दिए जाएंगे। जैसे देखो इस क्लास की बात करें तो ये जो 10 पेज का पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक नोट्स नाम से लिंक दिखेगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लिखने की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अपना बेटर कर लेना। ठीक है, और भी जितने भी क्लासेस वगैरह हमने अटेंड किए हुए हैं, जिसके भी पॉसिबल है हमने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, नोट्स जो भी नोट्स है जिस भी क्लास के अंदर जाना उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास आपके पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह है तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके जूनियर्स के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से ये भी बता देना, तो यूनिवर्सिटी वाइज पीवाईक्यू अपलोड करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर आप इस बार भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपने इस टाइम के एग्ज़ाम के पेपर भी हमको सेंड कर देना, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, देखो पेपर से आइडिया लगता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है, तो उस हिसाब से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोनीफोडियम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यार, प्रोटोनीफोडियम is an excretory organ found in flatworm and some invertebrates. It consists of a network of tubules ending internally in flame cells or phloem cords. Each flame cell has a tuft or cilia that beats to drive waste containing fluid through the tubules. The tubules open to the exterior via nephrohydropods helping in osmoregulation and excretion. ठीक है, नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन विजुअल रिसेप्टर्स। तो विजुअल रिसेप्टर्स आर स्पेसिफाइज्ड सेंसरी सेल्स इन द रेटिना दैट डिटेक्ट लाइट स्टिमुली. They are of two main types. First one is rod and the second one is cones. Rods are sensitive to dim light and enable night vision, while cones detect bright light and color, providing sharp vision. These receptors convert light into nerve impulse transmitted via the optic nerve to the brain. ठीक है, next question, describe briefly the integumentary derivatives in reptiles. तो reptiles possesses a dry chitinized integumentary adapted to prevent water loss. Their major derivatives include epidermal scales, claws, and sometimes horny plates. Some reptiles develop bony dermal elements like osteoderms. Benthal, the skin epidermal derivatives periodically undergo molting. These structures provide protection, aid locomotion, reduce water loss, and serve as a defensive adaptation against predators and environmental stress. ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन wheat organ in Amphioxus. So the wheel organ is a ciliated structure in Amphioxus located in the vestibule of the pharynx. It consists of a series of ciliated ridges that create a wheel-like appearance. Its main function is to generate water current directing food particle toward the mouth.
Thus, it plays an important role in filtering feeding and the animal's overall nutrition. ठीक है. Next one, describe accessory respiratory organs. तो accessory respiratory organs are additional structures that assign in breathing when gills or lungs are insufficient. In fishes, these include skin, paranasal, tubercula, intestine, and specialized chambers like labyrinth organs in anabas. Amphibians use skin and mucopharyngeal cavity for respiration. These organs enable survival in low oxygen environment, providing an evolutionary advantage in fluctuating habitats and shallow waters. Next one, Belanoglogus. So Belanoglogus, a hemichordate, is a marine burrowing worm-like animal. It shows a tripartite body organization that is proboscis, collar, and trunk. It possesses pharyngeal gill slits, a stomach cord, and a dorsal and a ventral nerve cord. Although once grouped under chordates, it is now placed in a hemichordata. Balanoglogus is an important for understanding the evolutionary link between invertebrates and chordates due to its primitive features. ठीक है. Next one, classification of Hadimania. So Hadimania is a Eurochordate, that is a tunicate marine animal. Its classification is first one phylum Chordata, second one subphylum, that is Eurochordata, or you can say Tunicata. Third one is class Ascidias, order Pleurogona, family Periodidae, and gene Hardimania. It is a sessile filter feeder with a sac-like body covered by a test tunic. Its larval stage exhibits chordates characteristics like notochord and dorsal nerve cord. ठीक है. Next one, Newtoni. The Newtoni is a retention of larval or juvenile features in the adult stage. It occurs when sexual maturity is reached without completing metamorphosis. A classical example is axolotl, which retain external gill but can reproduce. Newtoni play an adaptive role by allowing species to survive in stable aquatic environment while avoiding in risk of terrestrial transitions. ठीक है. और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है.